understand more about the shift of radio content, I would like to now invite Dr. Anurag Batra, Chairman and Editor-in-Chief of BW Business World and founder, Exchange for Media Group. A serial entrepreneur, media mogul, and a journalist, he has fingers expertly placed on the nerve of developments in the media world. Our first panelist is Mr. Tapas Sen, the Chief Programming Officer of Radio Mirchi. I would like to invite Mr. Tapas Sen to the dais. I would now like to call Mr. Amlan Jyoti Majumdar. Mr. Majumdar is the Director of External Broadcast and Public Relations at All India Radio. Our next panelist is Mr. Sharath Bhattatripad, a celebrated radio professional. Mr. Bhattatripad is the Vice President of Programming at Fever FM. Our next panelist is Mr. Ravi Bhagwat. Mr. Ravi Bhagwat is the National Head of Production NTR, Ideas and Integrations at Red FM. And our final panelist is Mr. Gaurav Karir, the National Programming Director at FM Tadka. Good afternoon, it's now an afternoon. We really have the pioneers, Tapasa is here, we can literally call him a father of the radio business in India. He's been associated with the largest radio network and he's created new IPs, created new leaders. We have Sharath who does a pioneering show and we have Amlanda, we have Ravi and we have Gaurav. So we have a fantastic panel. Please give them a bigger round of applause. You come all the way, I'm sure you didn't come only for the tea, coffee, and to get out of the home. You came for listening to these radio stars. So our topic is tuning into new audiences. What are these audiences looking for? So let me give the context and get Tapasa first and then get everybody in. First of all, radio is a medium that is very intimate. It is very personalized. Unlike TV, which feels like, a group viewing, a group interaction, radio, by the nature of it, is very personal. If I may use a Hindi word, और सब आप सबकी हिंदी सुदृढ़ है, हिंदी आती है ना हिंदी भाषा, तो आत्मीयता है. Radio is very, it's very personal. So in the last 11 months, we spent more and more time in our homes while we consumed all kind of content, much more than we did. We also consumed radio. Now radio is also about differentiation because of the mass audiences that every radio channel wants to get. Music became a very large part of it. Of course, within that there was innovation. So we will focus on what these new audiences want, what is the kind of content they're consuming, from which cities they're coming, some anecdotes, stories about it, some numbers. So let me start with Tapasda first and ask him, Tapasda, first of all, how big are these audiences? And give us a sense of what is bringing them to radio and what they're consuming. Thank you, Anurag. Okay, I think it's a bit of a myth to really believe that radio audiences have migrated to the smaller cities. In fact, I don't think it is even statistically accurate. Actually, because just think of it, what has happened in the last few years. Can I have this a little louder? Yeah. So clearly, I'm a loud Punjabi from Delhi. I don't need a mic. Tapasda is not a Punjabi. He does need a mic. That also is louder. Okay, go on, Tapasda. So just think about it, about a person in Delhi and let's say a person in Madurai. Okay. Earlier, they lived in two different worlds. Today, they live in the same world because there is nothing in the media space that is available to a person in Delhi that is not available to the person in Madurai. So the buttons are the same. So therefore, there is no reason for a person in a small town to now start migrating to radio. Nothing has happened. So why should that person really be migrating to radio? There is no reason. And also the point that I'd really like all of you to just follow on this issue is that all these names that we're talking about, radio, television, newspaper, ये devices के नाम हैं. Television is a device. Radio is a device. आजकल लोग रेडियो अपने मोबाइल फ़ोन्स पे सुनते हैं, लोग टीवी अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देखते हैं या अपने लैपटॉप पे देखते हैं,
मैं Zoom calls करता हूँ on my television. So the thing is that all these devices, all the hardware has completely lost its meaning, its identity. The only thing that has emerged over the last few years is the dominance of content. Content flows from just one form to the other. Like I said in one of the earlier conferences, it's a bit like the Hindu theology. You know, content is like Atma, and the device is like the body. The body is destructible, and the Atma just travels from one medium to another. When you're listening to podcast on your mobile phone, are you audio listener, are you a radio listener, are you a digital listener? What are you? In our organization, we have a brand manager of Times of India, and we have a brand manager of timesofindia.com. और इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है. क्यों? Because every time there is a hike in listenership of Times of India, and Mr. Vineet Jain wants to give out an increment, he doesn't know who to give out to. Because the Times of India editor says, it is because I created this product that there are new readers coming in. The timesofIndia.com brand manager says, लेकिन distribution तो मेरा है ना. तो ये reader क्या digital reader है या print reader है? So the only thing that you can do yourselves right now is to dissolve these differences in your mind between devices and platforms. We are all in the content business. In fact, I have a problem with this festival being called the Radio Festival. It is outdated in its name. It should be called the Content Festival featuring radio. Beautiful. And you know, Tapas Da is walking the talk. Radio Mirchi is no longer called Radio Mirchi, it's called Mirchi. That's the, you know, what he's saying is what he believes in and what he's implementing. And again, a lot of people would ask me, oh, you bought a magazine in Business World 7 years back. So I told him I bought a brand called Business World. Tomorrow, it is actually 360 degree. It is video content. So clearly, and the other thing is, just to build on what Tapas Da said, is, you know, when you think of this business and content kind of continuum and collaboration, you have to think as जहाँ भी लक्ष्मी जी का वास होता है, which is excellence in content, वहाँ जहाँ सरस्वती जी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी जी आई जाती हैं. So if you get good content, you get it right, I think business and numbers follow. And the large point Tapas Da is making is that there are still large audiences in metros and large cities, and you know, smaller cities still have a long way to go. But new audiences are getting added, and we'll come back to Tapas Da. But let me bring in Sharath. Sharath, apart from looking at programming at Fever, also does a very popular show on radio called Soul Yatra. I have not been able to listen to him because it is a 6 a.m. in the morning. मैं भी नहीं उठ पाता सर. हाँ, कई बार ये भी पहले रिकॉर्ड करते हैं. मैंने इनको एक दिन बोला था तो बोले कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. So, but Sharath, your commentary on what are these new audiences? Clearly, new audiences are getting added, and what are they looking at? What kind of content they are kind of consuming? And you know, there is something called digital audio broadcasting. अब आप देखते हैं RJs भी ना वीडियो भी पोस्ट करते हैं, क्या शरारत कर रहे हैं वो, किस तरह वो कंटेंट कर रहे हैं, वो अगर गेस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं. सो Tapas Da is right. I mean, we are no longer in radio business, we are in the content business. तो Sharath, we'd want your point of view from you. या बिल्कुल सही बात है. इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग समय है. मैं एज ए रेडियो प्रोफेशनल आपको बताऊं, थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ा मज़ा भी आता है. डर किस बात का लगता है? डर इस बात का, क्यों? मैंने सुना आप तो काफ़ी साल से शादीशुदा है. हाँ, अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है. तो एज अ कंटेंट क्रिएटर देखिए, मैं दो काम करता हूँ. मैं एक शो भी होस्ट करता हूँ, और मेरे को ये भी डिसीजन लेना होता है कि कौन सा कंटेंट चलेगा. और सबसे अच्छी बात ये होगी कि कंटेंट की ठेकेदारी खत्म हो गई है. आज मुझे लगे कि यार ये कंटेंट चलेगा, इंटरनेट कुछ और ही बता देता है. कई बार हम एक कॉल ले लेते हैं कि यार अच्छा, दिस इज नॉट, यू नो, दिस डजंट वर्क. बट व्हेन यू लुक एट टुडे द टिकटॉक्स, व्हेन यू लुक एट टुडे द यूट्यूब चैनल्स, यू रियलाइज कि यार आप शायद इंस्टिंक्टिवली एज अ कंटेंट क्रिएटर वो कॉल लेते तो शायद आप उसे रिजेक्ट कर देते, शूट डाउन कर देते, और वो तो अब मिलियंस में जा रही है व्यू. तो एज एन ऑडियो पर्सनैलिटी,
अब आपने आरजेस को सुना होगा, वो आरजेस अब जरूरी नहीं है वो उतने पॉपुलर हों जितने आप हो सकते हो, बिकॉज इन द न्यू डिजिटल वर्ल्ड anyone can actually make it big. You don't need a radio station, you don't need to be an RJ, you don't need to have anything. सिर्फ घर में एक माइक हो, आप पॉडकास्ट शुरू कर दो, आपको दुनिया सुनेगी. So this I think is the biggest change that is happening. What is good for a personality like me? जैसे मेरे लिए खुशी किस बात की है, आज मैं सोल यात्रा करता हूँ, सिर्फ दिल्ली में सुना जाता है, ग्लोबली सुन सकते हैं लोग मुझे. So वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, and that I think is the biggest thing that content creators are excited about, and that is the change that's happening. And जैसे तापस दा ने कहा, बात यही है, it's about the content. So रेडियो में हर वक्त पर्सनालिटीज को आपने प्यार किया, आपको मजा आया, यार ये आरजे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है. अब वो पर्सनालिटी ग्लोबल पर्सनालिटी बन सकती है. सो द ऑडियंस इज ग्लोबल, अब द प्ले फील्ड इज ओपन, तो हर कोई अब फतेह कर सकता है पूरी दुनिया पे. तो ये अच्छी बात है. अच्छा, डर किस बात का लगता है? डर इस बात का लगता है कि अब तो भैया कंटेंट की जब ठेकेदारी नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं है हम जैसे लोगों की. एनीवन कैन एक्चुअली डिसाइड द कंटेंट, सो वी नीड टू बी मोर ओपन टू कंटेंट. सो एज कंटेंट क्यूरेटर्स हमें अपना दिमाग और खोलना है कि यार हो सकता है ये भी चल जाए. सो देर इज नो राइट और रॉन्ग नाउ इन कंटेंट, वी नीड टू बी दैट मच मोर ओपन. तो बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त है, बहुत बहुत ही अमेजिंग वक्त है. तो अगर आपको रेडियो में इंटरेस्ट है और अब तक आपको लगता है यार अभी तक कुछ ब्रेक मिला नहीं, उम्मीद मत हारना, बिकॉज आप गेम चेंज हो. शायद मेरे लिए कह रहे हैं, मैं 10 साल पहले एक पार्टी पे तापस दा को मिला था और मैंने इनको बोला था मैं रेडियो शो करना चाहता हूँ, और अगले दिन इनको मेल भी भेजा था और इन्होंने आज तक मुझे रिस्पांस नहीं दिया है. अब मैं इनसे शो के बाद फिर अब आ गया, वक्त आ गया. मैं बट जोक्स अपार्ट, लेट मी गो टू अमलान दा. मेरी अर्चना जी से 2 ही शिकायतें हैं इस पैनल पे. वन, देयर इज नोबडी हु इज 20 year old. You know, we are talking about content, and content is being consumed by millennials. Second, there is no lady on the panel. You know, I think it is a manel, male panel. It is a manel. It is not a panel, right? So next panel we must have a 20-year-old, because I believe in the concept of reverse mentoring. What I can learn from them is more important than what they can learn from me. But let me bring in Amlanda. Amlanda. Air being such a, All India Radio being such a big impact, big numbers, being in the rural, I mean, अगर हम tuning into new audiences की बात करें तो All India Radio का जो role है वो बहुत अहम है. Tell us what is the kind of new audiences that are getting added and what is the specialized content you're doing for them? Well, thank you so much. First and foremost, I will say that the topic for today's discussion is the tiers. The three tiers generally which is talked of in broadcasting. But in All India Radio, actually we understand the tiers slightly differently, because we have already been doing broadcasting in 4 tiers. We have 4 levels of broadcasting. Traditionally, the international level, then the national level, then the regional level, and then the local level. So the local broadcast, which we are now talking about, taking it to the tier 3 cities, we have gone beyond that. Actually, long time back, in the early 1980s, actually we added the local radio stations, the FM radio stations, which were modeled after the commune radio in Vietnam. Now, which have already been there. So it is not that we have added a new tier of late, and we have new challenges so far as traditional radio broadcasting is concerned. So we have been having these audiences who have been with us, because as a public service broadcaster, we broadcast not only the entertainment-based programs but also the development and public service content we bring in. So by default, or someone who would like to have this content, consume these content, they will have to come to us and they have to listen to us. No matter a 3rd tier or the 2nd tier, the commercial radio which got added, where in the entertainment part, yes, there was certain migration from the public service broadcaster to these commercial radio stations. But then
if you have to have some development content or news, you have to come back to us. So really, we did not lose or we did not see a large-scale migration or transmigration in Taposh's word. Taposh was talking about the soul's migration, the transmigration of our listeners as such. Now, what has happened is the new audience, when the new audience has come to us, they have come to us because we have, as our chief executive officer was also telling at part of his keynote address, that we have added new modes, new platforms. The platforms like digital platform. We are also on YouTube or, for that matter, DRM. So what has happened to us, we have got X plus N. So this N is the additional component which has got added to our listenership. Now, what Anuragji was saying, that what should be the Mr. Sharad was telling that about the content. Now, so far, what was happening, we were deciding on content as a supply side issue. But it is no longer a supply side issue, it's a demand driven thing. Because there are so many options. A listener is a king or a monarch or a queen, empress. He or she can move away from a station because he or she has so much of choices, not only on traditional radio mode, but also elsewhere. So as podcast or very many other forms. So unless and until we have that kind of an understanding of the pulse of the listeners, we will not be adding, or if we add, we will fast lose out to the listeners. That's the reason why All India Radio is now coming up with niche channels for particular sports channel, Ragam, for classical music, or folk music channels. We are also coming up with a channel called Radio Innovation Radio, Radio Shakti. We are thinking in terms of coming up with a specialized, exclusive channel for the women. So these are the kind of things we are trying to address to the new audience who have come into on our platform. So that's what we are doing. Thank you, Amlanda. And I know that it's tuning into tiers. And tiers typically mean tier 2, tier 3, tier 4 cities, or it means, new ways of consuming the same content. Digital audio broadcasting is no longer digital audio broadcasting, it's digital audio video broadcasting. So clearly, we're in the business of content and audiences. That is what we are in. And, a lot of people ask me, what is Exchange for Media? So I tell them we're in the business of building communities. We are India's #1 media advertising communication community. We're not into events, we're not into a website, we're not into a magazine. So it's how you define. Clearly, as Tapas Da said, and Amlanda kind of cemented that, we're in the business of content and audiences. And yes, audiences are consuming the same content through podcast, through videocast, through what I call a simulcast. So, jargons can be used, but नए तरीकों से, नए माध्यमों से content का consumption हो रहा है. Let me bring in Ravi. Now, Ravi was telling me a story. I met him for the first time outside. I have a good pleasure knowing Tapas Da and Sharad for a while, but just met Ravi, and he was saying कि इनको एक publication में मार्केटिंग इंटर्न की 20 साल पहले नौकरी मिली थी, बट मैं नाम नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इन्होंने ली नहीं, और he went to a production house and then he started doing a show, and then he's grown into the role of a programming head, and also understanding the content and radio business 360 degree. So we'd welcome your point of view, Ravi. Thank you, Anurag. And it is my first time in a panel like this. तो मैं कुछ बोलूँ ना तो please. So and when I grow up, I want to be like here. I want hairstyle like him. आप इस पे एक पोल लेते, कितने लोग बिलीव करते मेरा हेयर स्टाइल इन जैसा हो पाएगा. Thank you. I really like you. You are an optimist. लोग बोलते स्ट्रेस से बाल झड़ जाते, मेरे बाल बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, बालों के बारे में इतना ही कहूँगा. भगवान ने 4 तरह के इंसान बनाए. कुछ को बाल दिए, कुछ को अकल दी. मेरे जैसे लोग ना जिनको अकल दी ना बाल दिए, और शरद जैसे लोग जिनको अकल और बाल दोनों दिए. ठीक है, तो आगे we get back to radio again. Yes.
सो सर बेसिकली जैसे आपने बोला कि फर्स्ट वी आर टॉकिंग, सर ने बोला कि दैट यू नो कंटेंट, वी आर ऑल कंटेंट, वी आर एंटरटेनमेंट चैनल्स एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, इज मीडिया, हम सब मीडियम से हैं सब, एंड लिसनर हर जगह पर है, लेकिन ये नए लिसनर्स आ कहाँ से रहे हैं और ये कौन है क्या है, तो मुझे आई कैन जस्ट से इट्स लाइक यू नो जैसे कॉम्बो ऑफर है सारा का सारा आई कैन पुट इट लाइक दैट, कॉम्बो ऑफर है कि चस्का है रेडी, मतलब हर एक मीडियम अपने आप में एक चस्का है। तो मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में गया, उसने बोला सर ये खाइए और साथ में आप हमारा ये एक सैम्पल ट्राई करिए, तो मैंने वो सैम्पल ट्राई किया एंड आई थिंक यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वेरी नाइस। तो अगली बार मैं शायद उस सैम्पल के लिए फिर वापस आऊँगा। तो सिमिलरली द ऑडियंसेस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लाइक यू नो प्लेइंग विद ऑल द मीडियम्स, वो किसी के अभी है नहीं लेकिन प्लेइंग विद ऑल द मीडियम्स, और अपने मन मुताबिक जब उनका मन करे, तो जैसे हमारा मार्केटिंग मिक्स, मीडिया मिक्स होता है हमारे ब्रांड्स का, तो जैसे लिसनर ने अपने दिमाग में ना कहीं मिक्स बना रखा है कि यार अभी रेडियो सुनते हैं, अभी यार थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ पॉडकास्ट सुन लेते हैं। सो ये सारे चस्के हैं, छोटे छोटे चस्के। मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा जिनको आदत लग गई, जिनको सुनने को मिला, जिनको मज़ा आया, दे विल कम बैक अगेन एंड अगेन। सो रेडियो इज़ वन ऑफ देम, डिजिटल इज़ वन ऑफ देम, एंड येस हाउ पीपल आर कमिंग, आई कैन से येस डिजिटल इज़ अ वेरी बिग you know boon for every medium, not just radio or print, it's a boon definitely. So ऐसे कई सारे कैंपेन्स जैसे हमने किए हैं, सो व्हाट वी फाउंड दैट व्हेन वी डिड स्पेसिफिक कैंपेन्स व्हिच वर टारगेटेड टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस, सो वो ऑडियंस ने जब हमको डिजिटल में देखा, फिर वापस वो रेडियो पे भी आए, दे स्टार्टेड you know talking to us because they never you know experienced that, but through digital they came to it. Personalities are one of the biggest things. Still I feel that people like personality, they might not like a just channel I'm interrupting, मैं रेडियो पहले भी सुनता था, अब भी सुनता हूँ, लेकिन अभी और कोई 25 साल पहले एक यूरी होते थे, उनका असली नाम योगेश सूरी है और उनको अच्छा नहीं लगता कि उस नाम से बुलाया जाए, तो मैं हमेशा बुलाता हूँ उनको, और उनकी he was number 4, he was an Air Force pilot, और I used to hear his show, you know, for various reasons which I'll tell you offline. एक शमशीर राय लूथरा वो करते थे, you know 11 बजे एक शो करते थे, 10 से 11, एक राजमा चावल और एक 10 से 11, ये दो। तो यू नो रेडियो शोज गॉट टू बी सिनोनिमस विद द पर्सनालिटी। इन सबके शरद अपने सोल यात्रा के लिए जाना जाते हैं, ऐसे ही हर, सो पर्सनालिटी इज व्हाट रेडियो क्रिएट्स। So go on, I just wanted to support your argument. So personalities, I think people still connect to those personalities. Then एक चीज़ मेरे को, शायद मैं ये नहीं मानता हूँ कि tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, मतलब कितने भी tiers बना दो, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी पेपर वर्क्स के लिए और हमारी एक्सेल फाइल्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक एस्पिरेशन लेवल इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है बिकॉज एवरीबडी हैज़ द एक्सेस ऑफ digital, everybody has the access of internet, so everybody has the access for information. And जैसे शरद ने बोला कि भाई जिसको जो मन में आए करो, अभी तो मार्केट ओपन है, अभी तो ग्राउंड खुला है, आपको पॉडकास्ट करना पॉडकास्ट करो, आपको वीडियो बनाना वीडियो करो, एंड इसी में करते करते लाइक आई सेड, मैंने शायद मार्केटिंग छोड़ के, वो एक जॉब छोड़ के मैंने प्रोडक्शन को पकड़ा एक टाइम पे, एंड इट हैज़ रियली हेल्प, रियली शेप्ड अप माई एंटायर करियर, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, लाइक सो वहाँ की एस्पिरेशन बहुत अलग ही होती है तो बहुत सीखने को, मतलब डिजिटल आने के बाद सब नॉलेज सबके हाथों में। वही ना वीरेंद्र सहवाग आए थे बहुत सालों पहले, बोले कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वो एक वही नॉलेज सबके हाथों में, एंड एवरीबडी शुड यूज़ दैट नॉलेज, एंड सबको अपना अपना रास्ता मिल जाएगा, किसी को वीडियो मिल जाएगा, किसी को रेडियो मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हमेशा हमेशा रहेंगी। समोसा आज भी है, बर्गर आया, समोसा आज भी है, लोग आज भी समोसा खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं। लंच कभी तो खाई है हमने पकौड़े। और अभी अब गौरव पे आते हैं, आप चस्के की बात कर रहे हैं, हम यहाँ तड़के की बात करते हैं। तो गौरव करी रेडियो तड़का से है। अगेन जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव एंड बैकग्राउंड, लोग यू नो रेडियो वाज सपोज्ड टू बी दिस लोकल मीडियम। सो व्हाट हैपेंड व्हेन द रेडियो लाइसेंसेस केम अप, most newspapers took up those licenses because they had editions for those cities, and radio became another way to kind of get those audiences. So Radio Tadka is owned by Rajasthan Patrika, and again in Rajasthan they are very big, they're the #1 media brand there, so clearly Gaurav can tell you a lot about what's happening in a state away from Delhi. Thank you Anurag. I'm Gaurav. Earlier मैं बिग FM दिल्ली का प्रोग्रामिंग हेड था, और जब ये अपॉर्चुनिटी आई टू हेड दिस नेटवर्क नेशनली, तो पता चला कि ऑडियंस अलग नहीं है। जैसे तपन दा ने बोला कि हमें लगता है कि tier 2, tier 3 ये एक सिटीज़ है, छोटे शहर हैं, बट दे आर वेरी अवेयर, दे नो कि हमें क्या चाहिए।
एंड आई एग्री विद अबजा कि जो मैसेज है वही किंग है. सो अगर आपका मैसेज उन्हें ट्रिगर करता है, then they will react to you and they will seek you out every day. And maybe if they like the influencer, which is the RJ, so they will look out for that RJ on digital and they will connect with him or her. So वो जो connect है रेडियो का वो गया नहीं है. मुझे लगता है कि पैंडेमिक में I think we spoke to my RJs every city, उन्होंने कहा कि youngsters काफ़ी tune in कर रहे हैं. So that has happened, maybe a bit of a dip because of the exam and all coming in. But the whole universe of radio is still there. एंड डिजिटल की हम शायद बाद में बात करें, मैं अभी बोल देता हूँ कि यू नो इट इज़ हेल्पिंग अस एंड वी आर हेल्पिंग डिजिटल ऑल्सो. आई फील यू नो बिकॉज गाड़ी में अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका है किसी ब्रांड के बारे में सुनने का, एंड यू स्विच इट ऑफ एंड दैट रिकॉल इज स्टिल देयर एंड यू गो आउट इनटू द मार्केट एंड बाय दैट. कन्वर्सली अगर उस ब्रांड ने आपकी एडवर्टाइजिंग में या आरजे ने बोला है कि आप इस .com पे जाइए, यू विल गेट बिग डील्स ऑन अस. So the radio is helping diverting sales through their website. So radio is helping digital, digital is also helping radio. But you know, as you talked about कि कुछ भी medium compartmentalize नहीं कर सकते, और वो आज भी सही है. Radio, TV, film, OTT is having its own space. And I feel that you know, like OTT is experimenting, has done so far, and will continue to do. In the same way, when I started to experiment with a show in my network, there was response. People liked that and they wanted to connect with that. Like for example, 9 o'clock was supposed to be, you know, love story. You know. So we made a show called Life की फिल्मी कहानियाँ. सवेरे 9 बजे, रात को 9 बजे. रात के 9 बजे. मैंने कहा ऐसे इंसान भी है 9 बजे भी, सवेरे भी, तो वो भी अच्छी बात है. प्यार तो बांटते रहना चाहिए. So this was a bit of a clutter breaking, you know, viral stars and how people become overnight stars and do their social initiatives की वजह से बड़ा नाम हो जाता है. So I'm saying experimentation has worked even in radio and I will always work. The medium will continue to give those inspiring stuff also off and on. क्योंकि लोग रेडियो को obviously entertainment के लिए सुनते हैं, लेकिन they want to get that bit of a, you know, trigger in the morning. And as I said, it's very personalized medium. It's a very one-on-one, you know. Unlike a lot of mediums which are very one-on-many, it is a very personalized. That's the beauty about radio. You know, that charm still stays. Tapassar, I'd like to come to you, and I'll ask the same question to everyone before we take in some audience questions. तो अपने प्रश्न छोटे से रखिएगा, और जितने अगर टिप्पणी है तो बोलिए टिप्पणी करना चाहते हैं, अगर प्रश्न है तो छोटा. हाँ, तो Tapassar, I'd like to know from you and all the panelists, if you had to look ahead over the next 12 to 18 months, what are the changes in the content landscape, business landscape of the content business of which radio is a part? तो कुछ बताइए आगे क्या होने वाला है. Okay, तो like I said at the beginning कि क्योंकि अब ये सब devices रह गए हैं and they are to be viewed as devices and not as platforms. So the most important thing is content, of course. लेकिन जैसे रेडियो है और जैसे सोशल मीडिया है या जैसे टेलीविज़न है, इनके ग्रामर मुख्तलिफ हैं, कंटेंट वही है, राइट. तो इसलिए मेरे को लगता नहीं है कि आपको कंटेंट में कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है. जो ज़रूरत है वो ये है कि नाउ यू आर कम्पीटिंग विथ अ वेरी वेरी क्विक ग्रेटिफाइंग कंटेंट एनवायरनमेंट. आपको इमीडिएटली आपको एंटरटेनमेंट चाहिए. So you have to change your grammar ताकि आप, whether it's radio or it's social media, doesn't matter. Like I said, आप अगर रेडियो मोबाइल फ़ोन पे सुन रहे हैं, so are you a mobile consumer or a radio consumer? I don't know that. आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप क्या कंज्यूमर हैं, राइट. तो the important thing is that entertainment has got to be at the forefront of it. That's all. और बहुत very quick entertainment, unfortunately. You know, that is a big change that has happened. And if you don't adhere to it, you will fall off. मेरी एक कंप्लेंट है वैसे with all radio. किससे है? आपसे नहीं. तो मतलब मालिक कौन है? आपसे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको. With all radio lovers of this world, okay, I'll tell you what. Wherever I go, मेरे को ऐसा लगता है कि जो रेडियो के जो लॉयलिस्ट्स हैं, उनमें बड़ी मजलूमों वाली ज़हनियत है उनकी. They always feel very, very victimized, and therefore they are always comparing themselves. We are better than television. Abhi, you know, in an earlier panel, one of the ladies said that television has reached only 66%, radio has reached 99%. It's, I think, a statement of victimhood.
Okay, she was not saying that 40% of all ad spend in this country is for television. You know, whereas radio is just 3%. We don't need to compare. दूसरे mediums जो है वो हमारे दुश्मन नहीं है. I think radio people have to understand that they have become very possessive about the medium. Unless you open up, जैसे अभी गौरव कह रहे हैं कि social media is helping us. I am saying social media, of course it is helping us, no doubt about it, but you have to view it together. If I am listening to, let's say Naved Khan, you know, and I am fond of him, I am no longer satisfied with the fact कि उसका show 12 बजे खत्म हो जाता है. He has to remain alive for me 24/7. So therefore, the moment he finishes, I switch over to his Facebook. The moment his Facebook live finishes, I'll switch over to his tweets. So it is a... सोते कब हैं फिर वो? नहीं वो सोते नहीं हैं. वही तो मैं कह रहा हूँ ये 24, it's a 24/7 business. And as long as we understand that the same content is flowing through all the medium, that is the big difference that we have to make, not in the quality of content. Absolutely, Tapasda. One of the things I'd say is that, you know, over the last 20 years of me starting Exchange for Media and reporting on media, I can say that what Tapasda is saying is the holy grail. At the end of the day, every medium is unique. And the audiences that interact with that medium come to that medium for the uniqueness of that medium. And the second point Tapasda is saying is that we are in a always on kind of a mode. Right? You see, Anurag, every time they speak about radio, they start talking about nostalgia. I don't know why. Of course, it is a nostalgic medium, and of course you're talking about, you know, the old stalwarts. There is no doubt about that. But radio is there and present also. क्या हो गया कि हम लोगों के साथ एसोसिएट हो गया कि अच्छा रेडियो, नोस्टैल्जिया, सीपिया, ब्लैक एंड व्हाइट, अमित सियानी. सही बात. The radio, you know, what Tapasda is saying is radio has kept pace, it has reinvented itself, and it is available to you 360 degree. At the end of the day, you know, you have to be 360 degree. And I keep saying, we are not teenagers anymore. Clearly we are not teenagers. I'm a hairless, toothless infant, but we are screenagers. We consume all our content on this screen or whatever screen that you use, right? And so I'd like to just get a quick comment and then take 2 questions. So I'll ask Gaurav your predictions for the future. Well, predictions, I'll be a radio jockey soon. Jokes apart, you know, I am above 40 and will not give the correct age. So I keep speaking to my RJs, जो मेरे से बहुत छोटे हैं, कि क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं. You know, so people want to listen to what they are consuming also. So for example, influencers in their cities, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या consume कर रहे हैं, वो भी radio पे बात होनी चाहिए. So whatever is relatable, that content will be there, and the way you present it and, you know, sprinkle it across the media that Tapasda is saying, वो जरूरी है. Okay, Sharad, your prediction for the future? मेरे हिसाब से 2 चीजें. एक तो the content will become real, and as Tapasda was saying, real time. यानी कि जैसे वो ज़माना था ना जब आरजे आके कहता भाई और बहनों, अब आरजे बिल्कुल एक रियल तरीके से बात करता है. कैसे करता है बताइए ना थोड़ा. बताइए ना. देखिए शरद, देखिए आपके आरजे होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए. मतलब पहले जैसे अमीन साहब आते थे, कहते थे भाई और बहनों, अब ये शो हम लेके आ रहे हैं, इसमें आज बड़े शानदार नगमे हैं. अब क्या हो गया यार, अच्छा शो शुरू करते हैं, कौन सा गाने सुनने का मन है आपका? अच्छा 2-3 गाने हैं यार, लेकिन पता है 1 मिनट, एक फोन आ गया, 1 मिनट भाई शो करने दे यार, ये माइक चालू है, हाँ तो क्या बात की जाए. नाउ दिस इज रियल, राइट? सो देयर वाज अ टाइम व्हेन, जब हमारे रेडियो स्टेशन में इट वाज कंसिडर्ड सैक्रोसैंक्ट कि यार अपना फोन बंद करके आना, फोन बंद करके आना, फोन बच जाएगा. अब हमने कह दिया भैया देखो कुछ भी करो, जस्ट बी नेचुरल. तो जॉक बैठा है, वो कर रहा, दरवाजा खोल के कोई अंदर आ गया, यू रिएक्ट टू, अरे भैया शो चल रहा है यार, क्यों कर रहा है? दैट इज व्हाट पीपल नीड. सो रियल इन रियल टाइम, आई थिंक दीज आर द 2 थिंग्स दैट विल डिफाइन कंटेंट. जो इस नब्ज पे जिसका हाथ होगा वो राज करेगा. यही है खेल. थैंक यू सो मच. Ravi, your crystal ball gazing and what will happen in the future? So the future तो वही है. I think regional focus बहुत हो गया. So Indian language content will grow. Yes, absolutely. Because जब when digital came, everybody said that, you know, world is one and सब एक साथ आ रहा है. लेकिन जब एक साथ सब आया तो उसमें लोगों ने अपना अपना भी इंटरेस्ट लेवल देखना शुरू कर दिया कि यार ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा इंटरेस्ट, एंड ऑटोमेटिकली जैसे कम्युनिटी अपनी अपनी कम्युनिटी भी बढ़ गई, अपना अपना
और लैंग्वेज को लेके हो गया, आइडियाज़ को लेके हो गया, अपने इंटरेस्ट को लेके हो गया। सो रीजनल कंटेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, चाहे वो डिजिटल के लिए हो चाहे रेडियो के लिए हो। हम मेरे जो रीसेंट एक्सपीरियंसेस है विद डुगा डुगा फेस्टिवल हमने किया, या हमने अभी स्वैग फेस्ट किया, या साउथ साइड स्टोरी किया। एक्चुअली जब साउथ साइड स्टोरी दिल्ली में हो रहा था, मैंने साउथ साइड स्टोरी दिल्ली में मतलब क्या, कौन देखने आना है, मतलब लिटरली दैट वाज माय इंटरेस्ट। दिल्ली वालों के बारे में बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं। कभी मैं तो दिल्ली से हूँ नहीं, रहता हूँ 21 साल से। बट द काइंड ऑफ रिस्पांस व्हेन आई सॉ ऑन ग्राउंड पीपल केम, इट वाज all the Malayalis also, all the South Indians. So you're saying the growth of Indian language content and we shattering the stereotypes that we've created. That's what you're saying. There are a lot of friends who are Punjabi who say कि ताइकुंडम ब्रिज सुनना है मेरे को। मैंने अच्छा आपको पता है? ये पंजाबियों के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। उस पे एक सेशन अगली बारी आप करिएगा अर्चना जी, मैं खुद आऊँगा उस पे। But अमलानदा। Well, radio listeners are not passive. So the kind of changes which I would like to see is more and more interactive programs where listeners do participate, because that's important, because radio has never been a passive medium. Listeners did not have opportunity or means technologically to participate. Now since that is available, now the content producers, content conceivers should devise programs which are more and more interactive and also not very studio-based programs. Radio should move out of studio, and community radio is doing a fantastic job in that. The community involvement in that production. So that is what it is to be doing. Because the community programs have to be something which is a program or based on the felt need of the community. And that is what is happening, and that is why more and more the community-based programs would thrive. Thank you so much. I take 2 questions and I'll wrap up in the next 4 minutes. But before that, what would I like to see the content/radio domain achieve? One is, if you look at the US, I won't take the name of the jocks, but there was some jocks called the shock jock, who I'm referring to. And people would pay for the paid radio to listen to them. And they had million subscribers, multi-million subscribers. So if you really have that affinity and the longing for radio content, I'd like to see someday some of the radio bands are paid for, where you actually pay for content. So that's because that happens, that then radio will move to a different level. That's what I'd like to say. Radio is already 360 degree. We are media neutral or form neutral. Everything that matters is content, and everything else is distribution. That's what I'd say. And I would say radio has invented itself. In fact, for the last 10 years, we at Exchange for Media do Golden Mics, which are radio advertising awards. We are a lot about media and advertising. So, but Tapanda has made me to think, how do we kind of contextualize it today? But 2 questions. Raise your hand. Tell us how much is your bank balance, and then I'll take the question. Clearly, this gentleman with curly hair. I'll always notice people with curly hair. कहाँ से आप? आई एम विशेष फ्रॉम जिम्स वसंत कुंज। एंड सर मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मतलब अगर आप मिलेनियल्स की बात कर ही रहे हैं, तो मिलेनियल्स का बहुत सिंपल सा फंडा है। आप नहीं है मिलेनियल। हाँ ठीक है सर, बच्चों की बात कर लो, टीनेजर्स की बात कर लो, ठीक है। टीनेजर्स का सीन क्या रहता है कि अगर उनको इंटरेस्ट नहीं आता ना एक इंसान में, तो वो डबल टेक्स्ट भी नहीं करते। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो प्रोग्राम है आप उसको ऐसे पर्सनलाइज करें कि वो लोग वापस उसको सुनने दोबारा आए? I think we take it to top. He's becoming an RJ. He's an RJ. He's been an RJ. So let all of us answer. Okay, so market forces will always decide that. But जैसे मैंने कहा कि ताकि आप हमसे जुड़े रहें, इसलिए हम रेडियो के बाहर आ गए हैं। सबसे बड़ा ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को रेडियो पर्सनैलिटीज़ नहीं समझें। वी आर मीडिया पर्सनैलिटीज़, वी आर कॉन्टेंट पर्सनैलिटीज़। आज के डेट में आई कैन टॉक अबाउट मिर्ची, वी डोंट हैव वन सिंगल प्रोग्रामिंग हेड, वी नाउ हैव ओनली कॉन्टेंट हेड. Okay, that's how I was introduced as Chief Programming Officer, and that's the point that I was trying to make. It has been converted to Chief Content Officer. तो अगर आपको हमें अपने साथ रखना है, we have to make sure, जैसे आप अगर रेडियो से बोर हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, फेसबुक पे आ जाइए, वहाँ पर भी मैं हूँ. आप ट्विटर पे आ जाइए, वहाँ पर भी मैं हूँ. आप कहीं पर आप ऑन ग्राउंड आ जाइए, ऑन ग्राउंड पे भी मैं हूँ.
यू नो द आइडिया इज आप जहाँ होंगे मैं आपको वहाँ फॉलो करूँगा, एंड आई शुड नॉट लेट रेडियो रिस्ट्रिक्ट मी. दैट इज द स्ट्रैटेजी. And you know, just to say, you know, I give you my comment, Sharad and Gaurav, and is, you know, there is content for everyone. Millennials like us. This is a very big misconception. Ki millennials only like this. See, just to explain, what you like as a content is like a bit like music. कभी गजल अच्छी लगती है, कभी पंजाबी. So you can't slot it. But I agree. That's why you got to understand the pulse of your audience and create something differentiated. अगर सॉरी, 5 साल पहले अगर आप कोई भी रेडियो स्टेशन चला दे तो 3 रेडियो स्टेशन पे एग्जैक्टली सेम गाना चल रहा होता था, 5 मिनट ऊपर नीचे. अब सेम तो कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, बिकॉज दे वर ऑल गोइंग फॉर ऑल मास. यू नो, नंबर्स मैटर फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग स्टैंड पॉइंट. सो क्लियरली आई थिंक you need to create a long tail. That's the concept of long tail. It's the book of Chris Anderson I read many years back on the long tail. Sharad, आपका comment? नहीं, बिल्कुल. आई थिंक द की, जैसे अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया कि ऑडियंस, इतना बड़ा मार्केट है अब हर चीज़ का. वो जो आपके मोहल्ले में वो जो आपके पापा के दोस्त आकर हर चीज़ पे एक बहुत शानदार पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, वो बड़ा मज़ा आता था आपको. सिर्फ एक बंदे को उनका यूट्यूब चैनल शुरू करना है, वो हिट हो जाएंगे, क्योंकि वो आप में भी, आपकी कम्युनिटी में हिट है ना, तो वो दुनिया में हिट हो जाएंगे. रियलिटी यही है. तो बस बात यह है कि आपको चुनना है कि वो ऑडियंस क्या है. रेडियो, आप उसका पॉडकास्ट बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप उसका टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल बना सकते हैं. अगर कोई बंदा कनेक्ट कर रहा है तो समझ लेना गोल्ड माइन है, क्योंकि फिर तो नोट पीछे पीछे आएंगे उस बंदे के. ये रियलिटी है. तो बस आपको ये देखना, नोट की चिंता मत करिए, आप इम्पैक्ट की चिंता करिए. बस नोट वोट वो पीछे आ जाएंगे. बिल्कुल. और वैसे कि जिनके कम बालों थे उनको जल्दी आते हैं. जैसे इनको आप देख लीजिएगा, ये अभी तक ये जैसी पर्सनालिटी, और आज हमारे बगल में बैठे हैं, इनको देख के समझ में आता है कि जिस दिन इन्होंने ही गोज इनटू एनी मीडियम और थोड़ा सा ये उस पर फोकस कर दें तो ये आदमी हिट है. प्लस इम्पैक्ट पे इन्होंने मतलब अपना प्रोडक्ट प्लग कर दिया. बस. Quick comment from you, because you've been a radio job, so and we'll take one more question. No, the radio job तो नहीं, बट yes प्रोडक्शन एंड प्रोग्राम जो भी. बट मैं ये बोलूँगा कि जो है ना, इम्पेशंस बहुत है. जो अगर मैं ब्रांड लेता हूँ तो उसमें वो यंग ऑडियंस चाहिए, और यंग ऑडियंस क्या कर रहा है, तो वो बहुत इम्पेशेंट ऑडियंस है. वो बिल्कुल अभी एज यू सेड कि मज़ा नहीं आया, खटाक से ट्यून किया और निकल के कहीं और. सो ज़रूरी बहुत ये है कि वो जितने एक्सपेरिमेंटल वो हैं उतने एक्सपेरिमेंटल हम भी बन जाएं. वो हमें पता कहीं ना कहीं हम उनकी भी सोचे कि वो क्या सुन रहे हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम इंडी म्यूज़िक का मैं बड़ा देखा, हमें पता नहीं कौन सुन रहा, बट जब नंबर्स देखे, डिजिटल पे जाके देखा, पीपल वर लिसनिंग टू इंडी म्यूजिक, पीपल दे वर लाइक स्मॉलर यू नो हीरोज ऑफ इंडी. सो वो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी कि वो कर क्या रहे. और तो बस यही है, एक्सपेरिमेंट करते रहो, उनको समझो, उनके एक्सपेरिमेंट के, तो आप भी एक्सपेरिमेंट करते हो. मैं ये बोलूँगा. So organize एक क्वेश्चन अपने, one take one more question. We'll let this lady, then you can ask us one on one. मैम आप पूछिए. Sir, I'm taking to another side of radio as a medium. Actually speaking, now tons and tons of boys and girls are going into media studies, and when we talk to them about career, they all ask us one question: what is the career in radio? Because radio, as you all are discussing, according to the parents, according to what we hear, read, or whatever we know, is a part-time career, like BA, RJ, something, but nobody takes it as a career. So I would like somebody said here, you all been discussing about content where of course the youngsters are giving us beautiful content, and I think a number of students are sitting here, they would like to know how the radio today can give them a career, which is called actually where they can go up and find that tomorrow I'm going to be a CEO or something like that. Let Tapasda and Gaurav answer that. Gaurav. I'll just अब आगे से आपसे वो पूछे, आप सिर्फ उनको एक चीज़ बताइएगा कि या कि हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट जॉक की सैलरी was above 1 crore. जी मैं बता रहा हूँ आपको. Okay, so it's a job where I'm talking about a team, the breakfast team, the two of them.
they have earned in 7 digits. Okay, so I think that should be enough to motivate the young person, because nothing motivates young people than good career. So that's the shortest answer. One of these things is, let Gaurav answer that, but because I've been lucky enough to be part of 2 media companies. One I started, one I acquired, and building it to the next level. And I went to a business school. I went to a business school called MDI. तो अच्छे business school में गया, लेकिन मैं मीडिया में हूँ, तो मीडिया में बहुत careers हैं. आप content और excellence पे focus करिए. So there are enough jobs. And as Tapas Das said, that we are in the business of content, or in the business of ad sales, or in the business of distribution, or in marketing. There are enough jobs. Content is only becoming bigger and bigger. And because of my role in both my companies, I can tell you that there's no dearth of jobs. So those who are media or mass comm students or whatever, whatever title, there's no paucity of jobs. It's just that you got to stand out, you got to have passion, and money is always important, but at the start of the career, I think it should be secondary. I keep saying, if you choose your hobby as profession, you don't have to work. Clearly, तो आप ऐसा कुछ choose करिए जो naturally आप enjoy करते हैं. और एक और चीज़ rule है. There's no rule for anything. I went to an engineering school, I went to a business school, worked for 4 years, started Exchange for Media 20 years back, then 7 years back acquired Business World and lost more hair and so on and so forth. कोई rule नहीं है. Absolutely. आप में वो मेरे पिताजी ने रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो में करियर स्टार्ट किया था. Then he went to BITS Pilani, chose to be a professor. So there are enough careers that all of these people can give you jobs, get their mobile number, emails, and they can. That I may say. You're talking about rules. I used to be Mr. Majumdar's announcer in All India Radio. आज अगर मैं वो अगर आज के वो broadcast सुने, so every day a DO would write 10 reports. And we would be off air in no time. So you're talking about experimentation, you're talking about no rules. And it has changed so much. And do something for a while. It takes a while to excel, and read exchangeformedia.com every day. There are enough jobs in that. समाचार फॉर मीडिया हिंदी में और exchangeformedia.com अंग्रेजी में आप पढ़िए तो आपको नौकरियों की कमी नहीं रहेगी, ना नॉलेज की. Thank you so much. We'll wrap up. Please give yes, अमलान दा. Actually, offering spot jobs. आज 20 लोगों को हायर करेंगे अमलान दा. ये तो gazetted jobs दे रहे हैं. Not that. I just wanted to tell you that, well, radio is something beyond RJing, and in fact, there are lots of opportunities, because so far what had happened, broadcasting or radio communication, development communication has not been considered as an integral part of our entire development process. But there is a change. Now the social sector ministries, government ministry, they are opening up, and also there are lots of, since in Prasar Bharati itself, for close to 3 decades, there has not been any recruitment. We are just opening up. So even in the government sector, lots of opportunities are coming up for the media practitioners, the students who are into, who want to choose a career in radio and television for that matter. And then, yes, the community radio stations, they also need hand-holding, and they need people who have specialized studies in radio. So there is no dearth of opportunities, like Anurag and others, Taposh has told. Gaurav wants to say something. And Gaurav also told. Yeah. So ma'am, look very positively, and the government sector is also is opening up to radio professionals. So I just want to add कि it's not a part-time medium, it's a medium which has a potential for your message. अब आप देखें अभी रेडियो शोज किताब पे हो रहे हैं, बुक रिव्यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहे हैं, स्टोरी टेलिंग हो रहे हैं, शेफ ड्रिवन हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जॉनर रेडियो पे आ रहे हैं, वीकेंड शोज हो या कैप्सूल्स हो, so whatever is your interest, whatever you can do, this is a medium to get that message across. And as sir said कि आप चाहे रेडियो पे करें, उसी मैसेज को पॉडकास्ट करें, यूट्यूब करें, ट्विटर, फेसबुक, everything is possible. What are you good at? What is your message? What can you give to the world is the primary thing. So take this radio up. It's a medium that you can go far. Yeah, but kudos to Archana ji for putting this forum together.